बैठ जाए हम। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ दर्द है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ दर्द है मुझे, मैं नारी हूँ। Ladies and gentlemen, honored guests, dignitaries, media people, today marks a significant moment as we come together to launch an event that embodies the spirit of empowerment, resilience, and preparedness. In a world where self-reliance and self-defense are not just skills, but essential life assets, we gather here to embark on a journey of discovery and empowerment. A self-defense program is not merely about physical techniques, it's about equipping ourselves with the knowledge, skills, and mindset to safeguard our well-being. Let's empower ourselves and each other. This is Aparna Mishra, State Director, SPFL. Welcome to you all today. Before we start the program, I would request our guests, can you please, Kiran ma'am, please start with the lamp lighting. Mr. Jalandani, Leader Jain, Ms. Poonam Sharma, and Dr. Anupam Chauhan, please come forward for lamp lighting. Renu? या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता साधु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा I would request the dignitaries to please take your seats on the dais. So please. Poonamji, please come to the dais. Anubhuti, please. Shanti, please. Everyone, please round of applause. Next, Jalandhani, please.
आगे कोई चीज moving ahead, I would like to call upon you, Mr. SDFL, Mr. SE Salif, to talk about SDFL and its journey in self-defense. Good morning. Obviously, we are running a bit late, so I will not take too much of your time. And I very well understand that everyone here who's gathered is eagerly waiting to listen to Honorable Dr. Bedi. And me too. Yeah. So, but quickly, SPFL is a part of Ministry of Skill Development. It was formed in 2015, but actually started operation in 2008. And it has been a short but very crisp journey for us. Apart from the sports, physical education, fitness, and our learning council members really have also came to a conclusion that fitness can be used in many other ways, not only in keeping fit physically, but also can be converted into a system where physical activity along with other techniques can set up something for the girls, and that's where we started developing self-defense program. And it's been a beautiful journey till now. The program that we launched has been widely accepted. We have been training around almost like 7, 8 states till now. Even places like Okara and some border areas of Kashmir have been tough to get people out there and bring them up. I think it's a wonderful journey. Not taking too much of time, we are looking forward from all PSUs, corporates, government departments to come forward and support. That is my request here and who are going to hear about it. And we are for a minute, small look at what we have done. So if you can play that. SPFL SC एक गतिशील और समर्पित संगठन है जो खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और स्किलिंग के क्षेत्रों में ध्यान, कौशल और अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ SPFL SC महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करवाता है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं। 28 मार्च 2022 को MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली ट्रेनिंग करवाई गई थी। जिन महिलाओं ने हमारी ट्रेनिंग को अटेंड किया है उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं इसके साथ जा रही हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कहीं मुझे कोई कोई खतरा तो नहीं है। Girl or women, because normally on every note and corner, they have to face such kind of feelings. Violence and conflict has increased so much. Different techniques से अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा हमें सिखाया गया। शायद ये हमारे स्कूलों में होना चाहिए था। सपोज मेरे आसपास किसी पर अटैक हो रहा है तो SPFL SC द्वारा सिखाया जा रहा यह सेल्फ डिफेंस कोई आम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नहीं है। काफी रिसर्च और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस ट्रेनिंग को तैयार किया गया है। ये मिक्सचर है फिटनेस, एजिलिटी और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। तो इसमें क्या सिखाते हैं कि आपको सबसे पहला मैं काम ये सिखाते हैं कि आपको सिचुएशन को कैसे जज करना। मेन चीज है टू अवॉइड द सिचुएशन।
सेल्फ डिफेंस में जनरली लोग गलत मायने निकालते हैं। और मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ जूडो कराटे कुछ मार्शल आर्ट सिखाएंगे, वो है पार्ट, लेकिन वो फोकस पार्ट नहीं, तो लास्ट में है। मेन पार्ट है सेल्फ डिफेंस में कि हाउ टू अवॉइड दैट अब्यूज। अगर उस क्राइम को ही अवॉइड कर जाओ तो आपको आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और कश्मीर के कुपवाड़ा जैसे दुर्गम इलाके में भी एसपीएफएल महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। आप लोगों के सहयोग से हम भारत की हर महिला तक यह ट्रेनिंग पहुंचाना चाहते हैं। We are portraying males as protector or an actor for the people. We cannot create males as face-wise as a monster in the society. So, training is a very, very balanced approach. It is not that necessarily when we go and train people and girls and we tell, here, okay, every guy or every person or every male is going to attack. But you have to be aware of it. That is very, very important to keep a balance. So that was another main part that we have taken care of while designing the entire curriculum. And I'm thankful to all people who are present here who are there to support us. And I'm also thankful to all our distinguished guests. And the rest of the program will love to hear from them, their thoughts, their vision about self-defense being mandatory in schools, colleges across the country. And that is what we are thinking. Thank you so much for joining us, and it will be a pleasure to be with you. Mr. Jalatani, President SDFL, a co-promoter of Asian Paints Limited, independent director on board of SPSC Limited and Cables India Limited, additional director on board of Reliance Foundation, and board member of startup technology company Adverb Technology Limited, co-founder of ELF Sports Foundation, FC Chairman Football, and TT League of India. I would request Mr. Jalatani to please come to the podium. Please welcome the Thank you. Good morning, friends. SPFL is privileged to have Honorary Kiran Bedi with us today. Our presence here today has boosted the credibility of a simple but necessary initiative like safety for girls and women. I also have on dais with me President of SPFL, Neeraj Ji, CEO of SPFL 13, who has helped turn around SPFL in a short time and put it on a growth trajectory. I also extend a warm welcome to Poonam Sharma ji, Dr. Anubhuti Chauhan ji, and my colleague at SPFL, Vipin Vikhi. Distinguished guests and members of media, ladies and gentlemen. With more and more women and girls going out now of their homes for studies and work, it is important that they stay safe. It is also our responsibility to take up and support such crucial programs as they are a step in the right direction. This is a pioneering initiative as Team SPFL takes it up not only for India but for the world. Till now, self-defense has been misunderstood, as Tasin said in the video also just now, martial arts, and people think that they are just fighting physically with the attacker, and that's the only way. Yes, it is important, as we all know, but many times it can also backfire as we fear. Through this program,
we shall train our students in many other aspects like good touch and bad touch theory, online safety tools, how to judge a situation beforehand, which is all about awareness and self-awareness, as you know, how to handle and buy time with attacker through dialogue, and last, if nothing else works, then get into combat. I'm very thankful that the ministry has reinforced the importance and finalized a standard curriculum on self-defense trainings through SPFL. I'm sure and request all states, various departments like school education, and corporates to adopt the national curriculum for self-defense while implementing the safe trainings. SPFL will be very happy to support all such organizations in delivering the right trainings on self-defense. I'm also delighted that to give benefits of such wonderful curriculum to all girls and women, even in remote area, SPFL and India Vision Foundation of Honorable Dr. Bedi ji have decided to launch free practical training through online classes. There's nobody who understands the importance of all this than Bedi ji herself, and I'm looking forward to her views and sharing her experience on this. With this, friends, we look forward to more robust workplaces and confident Indian girls and women going ahead. Thank you. Thank you so much, sir. अपने हौसले से तकदीर को बदल दो, सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ. Poonam Sharma ji is the Vice President of Fiki Flow. She is the Director of Ayurvedant Private Limited, which is a leading, and also she's a leading industrialist and philanthropist. She's a leading proponent of Ayurvedic products globally. She is associated with the Bernard Group, one of India's oldest and leading Ayurvedic brands, founded over 100 years ago by her husband's family. She travels extensively across the world to promote and educate people on the benefits of Ayurvedic medicines, tonics, and cosmetics. Poonamji was also the head coordinator of the Rani Lakshmibai Public Schools and takes a keen interest in its affairs. I would request Poonamji to please come here and talk about women's safety and security. Good morning. The esteemed guests on the dais, Dr. Kiran Bedi, Jalaj Dhani ji, Neeraj Jain ji, Zahid ji, sorry, Dr. Jahan. It is an esteemed panel, and I would like say that it's my absolute privilege and honor to stand before you today as Vice President of Fiki Ladies Organization, an organization deeply committed to the empowerment of India, women in India since 40 years. So today my perspective will be a bit of women empowerment and how what you all are doing today can be connected to women empowerment in India. Flow represents a powerful platform for women to connect, collaborate, advocate for gender equality, and its significance cannot be overstated in our journey towards a more inclusive and equitable society. So now coming to your topic, Meri Raksha, Meri Zimmedari. These are 4 simple words but carry a very profound significance and a reminder of our collective responsibility towards ensuring the safety and security of ourselves, our families, and our community. In a world filled with uncertainties, like you see the wars going on, and I mean, it is world's uncertainty, our lives' uncertainties, it becomes imperative for each of us to recognize that safeguarding our well-being is just not a duty, but a commitment that binds us together. It's a call to action, a reminder that we are not mere spectators in our lives, but active participants in shaping our own destiny.
It starts with personal responsibility, of course. We should be vigilant about our own safety and security in everyday life, even while following traffic rules. I mean, our safety is paramount. But beyond our immediate circles, Meri Raksha, Meri Zimmedari extends to the community and society at large. We should always engage in activities and initiatives that promote safety of women. Moreover, in today's interconnected world, online safety has become an integral part of Meri Raksha, Meri Zimmedari, according to me. We must exercise caution and responsibility in our online activities, protecting our personal information and being aware of the potential risks associated with the digital realm. I am sure you would agree that empowerment begins with safety. When women feel secure, they can conquer the world. In recent years, the issue of women's safety has been in the national forefront and the national discourse. So while we have made progress in many women areas where women need to go forward, this is we are a little lacking in the safety, and it's a matter of concern. India has climbed 8th place in the annual Gender Gap Report 2023 and is ranked 127 out of 146 countries in terms of gender parity. So though all this is fine, but there is a but. We cannot overlook the fact that a safer environment is not just a fundamental right, it's a human right, it's social justice, and it is a road to economic development. I'm sure you all agree with that. We at Flow firmly believe that women's safety is intimately linked to the economic empowerment, and it is of paramount importance in closing the existing gender gap. When women feel secure, they are most likely to enter the workforce, start business, and contribute to the country's growth and the country's development. This in turn leads to greater economic prosperity for the whole nation. There is a World Bank report which says that if women join the workforce, even a few women, or join businesses, do their own businesses, India will grow 0.7 trillion in economy. So our way to Vishwa Guru will be, being a Vishwa Guru of the world will be much easier. To address the issue of women's safety, Flow collaborates with the government in the schemes for the Mahila Suraksha. A lot of our branches are doing self-defense courses, and maybe in the future we will look at doing something with you all. Because again, the survey has said that if 50 to 60% women stand up to men who have learned self-defense and stand up to men, there are 50 to 60% cases lower of molestation or rape. It's a small figure. Self-defense class, whether, the physical importance, I would like to say is that it builds confidence. I'm saying it because I joined in college, which like I was telling, was long back, and where our mothers used to say that, walk, beta sir, niche karke walk karna, aisa acha nahi lagta wo ladke phir, whenever you're walking to college or doing something, ki niche dekho, unki taraf mat dekhna. But that is not the situation, because after we did this 6-week course, 30 years back, 35 years back, क्या था उस टाइम कुछ भी नहीं था. उसी में अपनी नजर नीचे से झुके बिल्कुल सीधे चल के चलते थे. That was such a small difference, and I'm sure you all can make so much of a difference. So the self-confidence, the calmness which comes when you know that you are strong enough, then the discipline, the street awareness, and I'm sure that is one of very, very important part. The self-respect, the warrior spirit, the fighter reflex, and measuring difficult situations, when to do what and when not to do what. So I don't want to take too much time, but I really want to talk about Dr. Kiran Bedi, your remarkable career in the Indian Police Service, your dedication to
social reform and your tireless advocacy for women's rights have inspired countless individuals across our nation. Your presence here serves as a source of inspiration to all participants and reaffirms the importance of self-defense as a means to enhance safety and security. हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है, यत्र नारस्त्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नहीं होती है, that's what I would say, जीवन की चुनौतियों को मानने का एकमात्र तरीका है सीधा सामना करना। आपकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने भाग्य की मालिक है, अपनी ताकत बढ़ाएं, उम्मीद करने के लिए किसी और का इंतजार ना करें। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. And rightly said, self-defense is the #1 life skill today. A woman of indomitable spirit and unyielding determination, she needs no introduction. Yet her presence is a source of inspiration for us all. Please join me in extending a warm and hearty welcome to the illustrious Dr. Kiran Bedi, a distinguished officer, a fearless advocate for women's safety, and a beacon of strength for individuals seeking to protect themselves in an ever-changing world. Her commitment to self-defense education and empowerment has touched the countless lives and continues to inspire generations. Ma'am, please. Can we all stand and please? Thank you very much. Please be seated and be comfortable. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप खास घर आए हमको बुलाने की, और मेरी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन को भी आपने जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सरकारी, आप सरकारी है कि प्राइवेट सेक्टर? तभी फर्क है, क्योंकि सरकारी नहीं आते हैं, तो सरकारी नहीं है, हाँ तभी ना, सरकारी होते तो क्यों आते, मुझे बुलाते बल्कि हाजिर हो, हमको आपसे काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोबारा, और जिस एंथुसियाज्म से आए, जिस भावना से आए, जिस प्यार से आए, जिस कदर से आए, कोई ना कर ही नहीं सकता। आपने मुझे वहां चढ़ा दिया कि आपके बिना ये नहीं हो सकता। मैंने सोचा वाकई यार, बट बहुत अच्छे, आपका धन्यवाद। आपके साथ और कौन आए थे? हाँ अपर्णा है, हाँ दैट्स राइट अपर्णा, आप थोड़ी अलग से लग रही हैं आज। तो अपर्णा और या दोनों ने मिलकर मुझे और मोनिका धवन को और मेरी संस्था को चढ़ा दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये पावर टीम बैठी है ना, अब मैं आपको काम बताऊं क्या कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनको, दानी साहब को, दानी साहब को बता चुकी हूँ कि मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग शुरू होती है जब मैं इवेंट में आती हूँ। पहले सोचती रहती कुछ नहीं समझ आता कि क्या रेलेवेंट होगा, लेकिन रेलेवेंस तब आती जब आप वाकई में उस जगह आए, लेबोरेटरी में आए और देखिए अब क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, किसकी चीज की जरूरत है। इसलिए मेरी जो थिंकिंग कैप है ना, वहां बैठे हुए शुरू हो गई। अब आपको अपनी थिंकिंग कैप के साथ शेयर करती हूँ, और थिंकिंग कैप में बहुत सारा होमवर्क है। वो है, पहली बात तो मैं स्लोगन चेंज करना चाहती हूँ। पहला स्लोगन आपने बोला, नारी मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी। नहीं, मैं कहूंगी नारी रक्षा सबकी जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी। You can call it नारी रक्षा सांझी जिम्मेवारी, ये भी वर्ड्स। So now you can make it more. So we must change it to something, because Poonam did talk about collaboration. So we can say नारी रक्षा सबकी जिम्मेवारी या नारी रक्षा सांझी जिम्मेवारी। सांझी कौन कौन है वो बताती हूँ आपको। तो क्योंकि आपने जो फिल्म बनाई थी ना, उसमें कल मुझे जो आपने दिखाई थी, उसमें we can now go into serial 2, जिसमें हम लोग थे मेरी रक्षा
आपकी जिम्मेवारी। तो मैं कोई आपका डिपेंडेंट हूँ क्या? मैं भी मकाम आ सकती हूँ आपको सेल्फ डिफेंस को या मेरी रक्षा, और मैं मेरी जिम्मेवारी तब मैं सेल्फ डिफेंस करती हूँ। अगर मैंने सेल्फ डिफेंस नहीं किया कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? सो आई थिंक वी कैन गो इन फॉर मेरी नारी रक्षा सबकी जिम्मेवारी। सो नारी रक्षा ना कि मेरी जिम्मेवारी, नारी रक्षा। नारी में हर एज की भी वुमेन होती, उसकी तो प्रॉब्लम है, सिर्फ यंग गर्ल की नहीं प्रॉब्लम है, ये सीनियर सिटीजन की भी है कई बार बेचारी की। सो वी कुड टॉक अबाउट नारी रक्षा सबकी जिम्मेवारी और सांझी जिम्मेवारी। वी कैन even look for a better name. सेकंड मेरा स्लोगन बदला जो मेरे दिमाग में आपके लिए, वो ये बताती हूँ। अच्छा जब उसकी बारी आई बताती। So let me recognize and thank Mr. Jalaj Kani for the kind words you said about me. Very, very nice to know that as an Asian Paints, आप ऐसे causes में भी जुड़े हुए और जुड़े ही रहेंगे। पूनम, thank you. फिकी का फिकी फ्लो से मेरा बड़ा अच्छा पुराना दोस्ती है, रिश्ता है। I'm so happy to meet you. You're the vice president of Ficky Flow, and you know I have a very good relationship and friendship with your flow team. And then, of course, we have Dr. Anubhuti Chauhan, who's the ex-co-chairman, chairwoman. Where's Anubhuti sitting? There, right. And of course, we have Neeraj Jainji, who is the president of this great initiative by SPEFLSC. कोई दूसरा नाम नहीं मिला आपको? ये तो कभी नाम याद नहीं रह सकता। कोई और लोग ढूंढ लो ना। ये तो रहने दो, लेकिन नाम ढूंढो। तो ये क्या नाम है जो किसी को भी याद नहीं रहे? प्रॉब्लम एक टंग ट्विस्टर है ना। हाँ, जो एक और जो मेरे मन में नारा आया वो है, लड़की को सिखाओ और लड़के को समझाओ। लड़के को सिखाओ, लड़के को समझदार बनाओ, लड़के को, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है लड़की पर? अटैक कौन कर रहा है? वो कहते मारो। जो आदमी उस पर जाओ ना लड़के पर, तो we have started with it कि हम prevention, but we will go to a series now. These are two very good series. अब मैं अपनी ड्यूटी निभाने आई हूँ आपके पास, जो आपने मुझे ऊपर चलाया था ना, तो वो। तो अब ये दो नारे हैं, अब इन दो नारों से हम कैसे फिल्म बनाएं, कैसे अराउंड, अब मैं उसकी स्ट्रेटजी बताती हूँ। How do we meet this? Because it's not just to state ये करो, लेकिन कैसे करो? Now let me tell you कैसे करो। First of all, जो आप कह रहे हैं teaching to defend, जरूर करो। ये करते रहना चाहिए, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे योगा इज बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, should self defense be? If it is not, then let it go. Let us request the government of India and the Ministry of Education make self defense for girls and yoga for all mandatory in the assemblies. If you do that, तो ये एक swiftness चलती रहेगी. So number one is my this request is you train her to defend, but we must now make it into a school program. Sports, three things will go hand in hand. One is sports, certainly yoga, and of course, the self-defense. If these three things go in these school assemblies go hand in hand, our girls and boys will come out better. I think they will grow up better, nurture. यही तो चीज मिसिंग रही है। कई स्कूलों ने करा, कई स्कूलों ने नहीं करा। लेकिन this is something which needs to be done in every school, in the school assembly, और एक तरह का डे का कार्यक्रम होना चाहिए। स्कूल का बच्चा छोटा हो या बड़ा, छोटी उम्र से भी बच्चे को सिखाया जा सकता है जिशु। So you can do this. So I think this is one, teaching her to defend, but make it into a curriculum. Secondly is teach the elders. Number two, अब आपने मुझे फिल्म दिखाई कर, वो फिल्म आपने मेरा ख्याल है वहां रुक गई। मैं समझती हूँ कि फिल्म को तुरंत उसकी लड़के के माँ बाप पर जाने थे। ये आपने कैसे लड़के पैदा किए? ये ऐसे क्यों है? ये तो नालायक थे, शुरू से थे, ऐसे थे, ये काबू में नहीं है मैडम। तो we go to the parents. So start making parents feel responsible for irreverent boys. So आपकी जहाँ फिल्म उसने मारा और अब आपने उसको सेल्फ डिफेंस दी, नहीं, we just don't stop. Somebody in the police or somebody comes
ऐसे नहीं, इन लड़कों के माँ बाप तक पहुंचते तो आपका कैमरा घर जाता है उनके और उनको शर्म आनी चाहिए। ये आपके लड़कों ने किया, आपको पता है? ये लोग आज कैसी लेट आते हैं, ये करते, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आपका क्या जिम्मेवारी? सिर्फ बच्चे पैदा करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, इनको परवरिश करना। So I think I would not stop the film without the parents. So if we can bring in role parents hereafter, it will help us. So number 2, teach elders. मान लो उसके grandparents है और बूढ़े हैं, मेरे तो काबू में नहीं है जी, हम तो बड़े मुश्किल हैं, ये तो हमारी बुढ़ापे की लाठी है। I think so something we need to do. Unless you take the responsibility, friends, back home, you will never be able to save the girls. Because the problem is in the home, not in the girl. You are dealing with the girl, but the problem is at home with the boys. So why are you not dealing with the problem? You are reacting. I'm preventing. I'm correcting. I'm curating. Because unless we go home, then I won't stop at that. I think तेरे स्कूल का नाम क्या है? कहाँ पढ़ा तू? और मैं फलाने स्कूल में पढ़ा। अच्छा, चल तेरे टीचर के पास चल। अरे ये तुम्हारे नलायक। नहीं मैडम, ये ड्रॉप आउट था। ये तो ड्रॉप आउट नलायक था। So let's trace the school, let's trace the college. तो अगर आपने समाज को शर्मिंदा करना है, तो ये पता नहीं तूने गड़बड़ की, तो सेल्फ डिफेंस तो लड़की तुझे मुक्के मारेगी, लेकिन कैमरा तो हमारे घर आ जाएगा, कैमरा तो स्कूल भी चला जाएगा, तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम पेरेंट्स को भी ना छोड़े, माफी मांगे फिर आगे से खबरदार तू रात को लेट आया, टाइम से आएगा वापस, खबरदार तू, मुझे पता था तू ऐसी हरकतें करता, तो कम से कम कहीं तो फर्क पड़ेगा। नेबरहुड में भी शर्मिंदगी आएगी। Unless we name and shame बीट ऑफिसर आएगा घर में, ये लड़का ठीक है और तमीज तो नहीं, तो बीट ऑफिसर की क्यों जिम्मेदारी लग सकती है? बाय द वे, police officers claim, Delhi police claims we got a beat system. Oh, what the beat system is for? Beat system यही तो है, आवारा लड़कों की नजर रखना, senior citizens को विजिट करना. This is the job. So you see, unless we do a comprehensive ecosystem, we are creating ecosystem for the girl who is vulnerable. We cannot stop at just she being an tourist. Then एक हुआ, फिर दूसरा फिर होएगा, तीसरा फिर होएगा, चौथा फिर होएगा. वो भी होता रहेगा, लेकिन अगर उसको कम करना है, we have to have a prevention plan, education plan, name and shame plan, training plan, surveillance plan. That means we need to create an ecosystem, which includes the beat officer, not the police commissioner. In Delhi police and everywhere, there is a system of beat. हर चपा चपा हिंदुस्तान का किसी ना किसी पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है, वो आए और नहीं अलग बात, लेकिन है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो कम से कम नहीं तो 100 नंबर पे बताए. So we need to work on teaching her to defend. Second, teach the elders and parents to have decent sons. And third is teachers. I talked about the school. So you go to the school, अरे स्कूल का नाम बदनाम हो गया, एडमिशन नहीं आएगी, बस नहीं आए तो फिर तुम इसका मतलब, तो टीचर कहे कि ये लड़का तो ड्रॉप आउट था मैडम, हम क्या करें? टीचर की जिम्मेवारी वहां खत्म नहीं होती जब लड़का ड्रॉप आउट होता है. टीचर की जिम्मेवारी उसके घर जाना है, ये लड़का आया क्यों, आया क्यों, तो ड्रॉप आउट हो गया तो करता क्या, तो भाई यही तो करेगा, नशा करेगा, गैम्बलिंग करेगा, गलत क्राइम्स करेगा और लड़कियों छेड़ेगा और करेगा क्या, हमारा दर्द है ना. सो आई थिंक व्हाट वी रियली नाउ नीड टू डू इज क्रिएट एन इकोसिस्टम. मान लीजिए वो गांव का है, जाओ गांव में पंचायत को पकड़ो, गांव की महिला मंडल को पकड़ो. सो वी नाउ फिक्स इट एट द विलेज रूरल लेवल. तो जब सारे गांव में तो बदनाम होने लगेगा, माँ बाप कहेंगे बदनाम कर दिया तुमने, हमारा नाक कट गया, अब लड़का जो करेगा तो नाक कटेगा. तो कम से कम कोई तो शर्म आई. अभी तो वो anonymous है, we are keeping them anonymous. They're getting away. They're not even coming in the police record of ruffians because there's no complaint made. And even if a complaint is made, there's बेल उसकी हो गई, बेल पर भी कोई जिम्मेवारी नहीं कि बेल का जब करे और वो खतरे से करे. I want, if you really want friends, crime prevention, women security,
हमको इकोसिस्टम के बिना काम नहीं बनेगा। और अगर आप इस रास्ते पे चले हो ना, तो you go for ecosystem. Now this is skill for parents. So I would say, and not only panchayats, I would go to even community leaders. I would go to RWS. RWS को पकड़ो, municipality को पकड़ो कि आपने अपने लड़कों को क्या सिखाया, आपके लड़के से आया, ये resident आपका है. So it is naming and shaming in RWA, naming and shaming a municipality. These are their jobs. The mayor, the municipal corporates, this is the corporates. Then take the corporate. कॉर्पोरेट को पकड़ो, उसने जिसने वोट लेने जाके तुमने क्या किया यहाँ पर, कैसे? It is also his job. It's not intrusion. Let me tell you, privacy में intrusion नहीं है. It is a part of creating, enhancing social security. This is my first section of prevention. Second part of my this thing is, जो मैंने पहले कहा, include girls in sports, because जब तक लड़कियां खेलेंगी नहीं, travel नहीं करेंगी बस में, क्योंकि लड़कियों को गर्दन में पटा जरा बस में बढ़ा तो प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि उनको माँ बाप बस में चढ़ने नहीं देते, क्योंकि तो they are not strong, they're physically weak. How can you train civil defense girls to physically weak girls? They should be in sports. चाहे एक फुटबॉल से खेले, भागो. So unless we encourage more sports, which is national education, but that's where we need to encourage. So girls in sports, mobility. And third is nutrition. उनका बुरा हाल है इन गर्ल्स का. They are very weak. Their hemoglobins are so low. They are never getting medically tested. सिर्फ दाल रोटी चावल से बढ़ती है. Their parameters are very low. Their menstruation is bleeding them on a regular basis. Friends, what are you talking about these girls? आप किन लड़कियों की बात कर? ये कमजोर लड़कियां. तो क्या आप पहले देख रहे हो कि जिसको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हो क्या वो हिम्मत है उसको ऐसे करने की? ऐसे करने की हिम्मत है क्योंकि उसे कभी खेला नहीं, कभी मोबिलिटी नहीं, बड़ी प्रोटेक्टेड औरत है, उनका खाना भी ठीक नहीं. So we need to work on these areas of better nutrition. Take her to the medical checkup and you will see their hemoglobins are low. And then particularly gynecology, if they can give them, you see, I'm creating this whole prevention system. कारण क्या है? Because मैंने उस दिन पूछा, हमारे पास boys, कुछ हमारी संस्था के पास हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैंने कुछ लड़कों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये आप लोग लड़कियों को क्यों छेड़ते हो? नहीं छेड़ता. मैं कहा नहीं, तेरे दोस्तों छेड़ते हैं. हाँ देते. क्यों छेड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है इससे टिकायत तो लगानी हुई, इसलिए रोके घर ही चले जाना. वो कमजोर थी, फिजिकली भी मेंटली भी. तो हम जब स्पोर्ट्स खिलाएंगे तो लड़की मेंटली भी स्ट्रांग होती है, फिजिकली भी स्ट्रांग होती है, और साथ में उसको खिलाओ भी. उसको केला संतरा फ्रूट लेके आओ, वो खाती नहीं, फ्रूट से खाती नहीं, चावल रोटे पराठे खाते हैं. So there is nothing else in the food. Our girls are nutritionally weak. Take medical camps there. Ask them to do a test check and you will see. See, I'm talking about a basic larger national problem on the way we grooming our girls. ये है रही प्रिवेंशन की. उसके बाद मैंने एक फाइनल कैंपेन जो देना मैंने कहा था ना कि मैं आपको होमवर्क दूंगी, दानी साहब को भी और आपको भी टेस्टिंग जी, वो है इम्पोर्टेंट बात. जब आप बिफोर एक और आइडिया देखा हुआ वो ये है कि गर्ल्स की नेटवर्किंग शुरू करो. ये आपस में नेटवर्क नहीं करते, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ताकि वो एक दूसरे से सलाह ले सके. दे आर नॉट नेटवर्क. ये सिर्फ ये नहीं कि अच्छी फिल्म देखी कहाँ जाएगी बुलाना. दे नीड टू नेटवर्क. आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दे नीड टू स्ट्रेंथन ईच अदर. इट्स लाइक सिस्टरहुड. आपस में सिस्टरहुड बनाओ, क्योंकि अपनी सिस्टर से शर्माते हैं बात करने की, लेकिन फ्रेंड से नहीं शर्माएंगे. तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मैं क्या करूं, तो इधर जाओ, इस डॉक्टर पर जाओ. So encourage them to create WhatsApp group of sisterhood. So let's call it creating a sisterhood among us. So sisterhood, friends, is very important. Finally, एक और चीज before I come to the homework is we need to also, मान लो आपने वो फिल्म बनाई जैसे आपने बनाई थी कि लड़की को करा तो लड़की ने सेल्फ डिफेंस कर, लेकिन साथ साथ दिखाओ दो लड़के जा रहे तमाशा देख रहे, they come and hit the boss. That's called good Samaritan. And they are boys. Now they are boys. We must show positivity also that they have come and rescued the girl. अगर दो लड़कों ने नालायकी की तो दो लड़कों ने समझदारी भी बनाई. और ये कोई नई बात थोड़ी है. अब 2 हफ्ते पहले एक इंसिडेंट जहां एक शहर में एक छोटी सी लड़की ब्लीडिंग करती हुई सड़क पे चलती गई, मध्य प्रदेश का केस.
वो चलती गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की। पता है किसने मदद की? एक और आदमी ने। उसने क्या किया, उस लड़की के पास कोई कपड़े नहीं थे, उसने अपनी शर्ट उतार के उस लड़की पर डाली। That means we need to recognize it. So why should we not talk reality? कि अगर लड़की को छेड़ा गया और दो लड़कों ने देखा, वो भी स्कूटर उन्होंने पार्क किया, उन्होंने मारा उसको, उसको भी मारा। That means हमारी सुरक्षा साझी है, सुरक्षा कॉमन है, ना कि लड़की सेल्फ डिफेंस करे। सो सेल्फ एक तो चिल्लाए, नॉइज भी करे, और लोग जाते हुए, नॉइज इज अ वेरी पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। शी मस्ट स्क्रीम and she must laugh, and when she hits, she should scream and she should create a lot of noise, ताकि noise आसपास आए और लड़के सुन के आए और वो आए और उस लड़की को के साथ मदद करे, लड़की को ठोके, उनको लड़के भी लोग। That's called समाज, that's called social response. We want social response because it's a combined. लड़ने लड़की को विक्टिम भी रहना है और कहना खुद ही तू डिफेंड कर, ये पॉसिबल नहीं है। विक्टिम होके वो घर जाएगी करने के लिए, लेकिन उसको समाज भी आता होगा, उसमें भी हिम्मत आएगी और लड़के में भी, तो समाज को क्रेडिट मिलेगा, समाज में एक अवेकनिंग आएगी। सो आई वुड से मेक अ फिल्म ऑफ गुड स्मैरिटन्स। गो बैक टू दिस बॉय इन मध्य प्रदेश, जिस लड़के ने उस लड़की को बचाया, उसकी फिल्म बनाओ, उसी के बेसिस पर फिल्म बनाओ। तो और बाकी के लड़ाइकों ने नहीं किया, उस लड़के ने लाइक वो ट्रैवल कर रहा था, उसने अपना ट्रैवल भी चेंज किया और रुका उसने, दिस इज अ गुड बॉय, यू नीड टू ट्रेस हिम एंड रिवॉर्ड हिम and reward him. I'm surprised why did we not recognize him and interview him? हमें ऐसी शिकायतें वीडियो में तो दे दी, लेकिन ऐसे लड़के अगर लड़के भी सामने आते हैं तो उनको recognize करो। Why condemn them? Why not recognize them? कि अगर तो ये दो लड़के ने गड़बड़ की तो ये दो लड़कों ने बचाया भी, तो हमारे समाज में बैलेंस भी है, लेकिन वो दोनों को कैसे क्यों पैदा किया और दो लोगों को भी सोचाओ कि तू कैसा था, ऐसे संस्कार तेरे पास कैसे आए, go to his parents also। ये आपका लड़का बड़ा लायक निकला, कैसे बना? ये मैडम साहब शुरू से ही था, ये शुरू से इसके संस्कार। तो आईना पेरेंट्स की बात, आईना स्कूल की बात, यू रिकॉग्नाइजिंग द गुड स्कूल, यू रिकॉग्नाइजिंग द गुड पेरेंट, and you're recognizing also bad and good. So bad and the ugly, good and the ugly should go together. And last but not the least, is something मैं आपको कह नहीं रही करने को, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, संस्था में साधन कम होती है, जुरिस्डिक्शन कम होती है, और हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपने देखना हो तो कभी आप देखना, हमारी एक संस्था है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन, दोनों जने मिलके हमें गुड बॉय कैंपेन चला रहे, कॉल्ड गुड बॉय कैंपेन। गुड बॉय कैंपेन का मतलब है कि हम तुमको लाइव बनाए और तुम ऐसे गुड स्मैरिटन वाली हरकतें करे और तुम गुड बॉय बनो। तो वो कैसे कोई लड़का कहे मैं गुड बॉय क्योंकि मैं अच्छी हरकत करता हूँ, मैं बड़ों की भी इज्जत करता हूँ, मैं लड़की को भी नहीं छेड़ता कभी और इज्जत करता हूँ। सो देयर इज अ गुड बॉय कैंपेन। उसमें समझदार है, समझदार लड़का, तो जो हिंदी में तो गुड बॉय कैंपेन, अच्छा लड़का कैंपेन, इट कॉस्ट नथिंग। बट इफ यू स्टार्ट अ कैंपेन, what we are doing in the last few years, friends, what I've noticed is we are focusing all the time only on strengthening the girls, empowering the girls, educating the girls, skilling the girls. We are leaving out the boys. We've left them out. तो जब आप लेफ्ट आउट कर देते हो तो फिर कहते जो दिल करता हम करेंगे, तो मानो तुमको तो हमारी परवाह नहीं, हमको अपनी परवाह है। We must focus campaigns on boys. And we can start a campaign called the Good Boy Campaign. In the Good Boy Campaign, ऐसी अच्छी हरकतें, क्या भी Good Boy Campaign, आप भी है ना? Good Boy, ये है Good Boy Campaign। ये देखो, आप भी है ना? Boys को दिखाओ, तुम भी हो ना? Brave Girl Campaign, brave तुम बात, तुमको अपने आप को बचाना था। So it's a brave campaign, courageous girl campaign, good boy. Boy को मैं नहीं कह रही courageous boy, वो तो कह रही है भगवान जिसको ये दिया ना, फालतू में extra. So लड़कियों को नहीं दिया, लड़कियां lose every month, girls lose every month, friends, boys gain every month. हकीकत है कि नहीं? Not. अरे accept क्यों नहीं करते? Girl lose every month, only to prepare for the society that she becomes a mother. To become a mother, she loses everything. To become a mother for the society, she loses every month. She suffers every month. She suffers the pain every month.
वो स्कूल नहीं जा पाती, कोई काम पे नहीं जा पाती, काम ही लूज करती और वो किसी को बता भी नहीं पाती। उसके पास गायनोकोलॉजिस्ट भी नहीं उसको मिलता। मैंने देखा है, मैं महसूस करती हूँ। और उसके पास गायनोकोलॉजिस्ट भी नहीं मिलता। और गायनोकोलॉजिस्ट भी बोलते पड़ेगा पहले 500 रुपया रखो फिर दूं। और अगर सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाती है तो लाइन में लगी रहती है और उसकी टाइम टर्न भी नहीं आती है। It's a fact. I have seen this every day with my own eyes in my own office. Now, you want to believe me? In my own office. Yes, these girls don't have the money to all the time. I have to safarish every time to get them a gynecologist and get them fees released or get them tested. They don't have the money to pay for the test. And what happens? Every month they lose at least 1 week of work. अब आप कहते हो कि प्रोडक्टिविटी लड़की की कम है, कहाँ क्यों नहीं प्रोडक्टिव? नेचर ने उसको बनाया है ऐसे और उसे ऊपर से उसको खुद कहते हो खुद ही प्रोटेक्ट कर अपने आप को। साथ में वो सफर भी करती है और अब उसको कहती है सेल्फ डिफेंस सीख और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। बदतमीज आदमियों को सीधा करो ना। लड़कियों को खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। पेरेंट्स उसको खिलाते नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, लड़कियों की रियलिटी है। आप और मैं डिफरेंट हैं। अपने जैसे नहीं करो कंपैरिजन करो 90% के साथ। आप और मैं क्या 10% होंगे जिनको माँ बाप ने सुझा दिया, बढ़ा दिया, बोलने के लिए लायक बना दिया। 90% तो दूसरी है, लेकिन वे हैं विक्टिम्स बॉयज के, और वो बॉयज के मालिक है पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स, राइट? सो वी नीड टू गो इन फॉर अ गुड बॉय कैंपेन एंड अ ब्रेव गर्ल कैंपेन। ए ब्रेव गर्ल उसे सेल्फ डिफेंस सीखा था, ये मारा, ये गुड स्ट्रैटेजी देगा, ये लड़का अच्छे संस्कार का था, ये है बैड बॉय कैंपेन, ये है बैड बॉय, ये गुड बॉय। स्टार्ट मेकिंग अ कंपैरिजन of this. This will give the image to the whole society as a whole. Good parents campaign, good grandparents campaign, good teacher, good school. मैंने कहा ना, सारा साल लगे रहो, सारा साल का होमवर्क है ये, सारा साल का होमवर्क है, इसके लिए पैसे भी लगेंगे, पर फिल्म बनानी है, कौन देगा पैसे? एशियन पेंट है और बैगन आती है, च्यवनप्राश भी है, और च्यवनप्राश तो लड़कियों को इनाम में मिलेगा कि ये खाओ। गुड बॉय कैंपेन में गुड बॉय को, गुड गर्ल कैंपेन में च्यवनप्राश, और गुड बॉय को क्या दोगे? उसको क्या दोगे? बॉल। यस, परफेक्ट, उसको बॉल देंगे जाके। सो व्हाट इज दिस इज द होमवर्क आई थॉट आई वुड गिव यू। आपने गलती की मुझे बुला के होमवर्क दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मेरी पुरानी आदत है और आपने मुझे इस माहौल में इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया, ताकि मैं आपको कुछ विचार देखूं, क्योंकि आपसे आपने मेरे से अपेक्षा बढ़ा दी थी कि मैडम आएगी तो कुछ मिलेगा, तो मैंने ढूंढा ही था ना कुछ। तो दिस इज व्हाट आई थॉट आई कुड शेयर विद यू। थैंक यू वंस अगेन। Thank you, ma'am, for an enlightening and empowering session. Your insight will undoubtedly serve as a guiding light as we continue our journey towards personal safety and empowerment. Now we will launch 2 online short video movies here, and they will be streamed live right now on SPFM, India Vision, and Demonstrative Learning YouTube platforms. Before we start the movie, I would like to tell you that Dr. Kiran Bedi ma'am has supported this online defense national program. We have been doing on ground self-defense activities so far, but now with this association with India Vision, we will be able to reach out all girls and women to every corner of the city, every village and school by online method. So these national trainings are supported by Ministry of Skill. Can we have the videos, please?
जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम वरुण रावत है और मैं एक SPFL सर्टिफाइड मास्टर इंस्ट्रक्टर के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा, किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही से या जागरूकता न होने की वजह से किस तरह का हमला हो सकता है, किडनैपिंग अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन साथ में ही थोड़ी सी नॉलेज होते हुए टेक्निकल के साथ आप इस को डिफेंड भी कर सकते हैं। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अब आपको दिखाएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करके आप इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अपने सीनियर इंस्ट्रक्टर शशांक और दिव्या को अभी इनवाइट करता हूँ और ये आपको स्टेप में दिखाएंगे कि इस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व करें। पहले स्टेप में हम लोग आपने देखा कि अटैकर का हाथ एक महिला के मुंह पे आता है, चेहरे पे आता है। उसकी मंशा है कि किसी तरीके से इसको पीछे खींच के किसी अकेली सुनसान जगह पे ले जाए या किसी गाड़ी की तरफ खींच के ले जाए। लेकिन एक महिला थोड़ी सी जागरूकता से, थोड़ी सी टेक्निकल नो-हाउ के रहते हुए अपने सीधे हाथ से हुक बनाकर उसके फोrearm पे, जहां पर कलाई जिसे बोलते हैं या घड़ी बोलते हैं, और हुक बना के पूरे वजन से नीचे खींचती है। नीचे खींचने की वजह साथ साथ वो अपना ब्लड प्रेशर जो कि हिप मसल होता है उसे पीछे धकेल देती है। उसी के साथ साथ उसके उल्टे हाथ से पूरी ताकत से अपना उल्टा हाथ छुड़ाते हुए अटैकर की कलाई पे बहुत तेजी से दांत से काटती है। अब इस काटने की वजह से उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। उसी समय जब वो उस दर्द से सह रहा है, उसके नाजुक अंग में प्रहार करते हुए पूरे हाथ को, जिससे उसने मुंह दबाया था, जो उसकी चोट पे है इस समय, उसे दबाते हुए वो एक 360 डिग्री का टर्न लेती है। इस टर्न के साथ आप वो अपना नी स्ट्राइक उसकी छाती पे वार करते हुए उसको पुश करती है 45 डिग्री एंगल पे, जो कि वो जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जिस तरह से एक सेकंड अटैकर भी साथ में है, हमलावर कितने भी हो सकते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ के उसका हाथ पकड़ रहा है। अब उसे वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेक्निक को हम सिंगल हैंड ग्रैब डिफेंस है। इसमें महिला या लड़की जो कि थोड़ी सी भी ट्रेन है, वो जिस हाथ से उसे खींचा जा रहा है, मान लीजिए उल्टे हाथ से, वो उसी के साथ अटैकर को रेजिस्ट करने की बजाय उसी के साथ फ्लो में आगे जाती है। सीधे हाथ से अपना ही हाथ ऊपर से ग्रैब करके उसे ऊपर छुड़ाती है, खींचती है। साथ में अब अटैकर कभी छुड़ाने के बाद वापिस जरूर आए। वापिस आते हुए जिस हाथ को उसने छुड़ाया है, धक्का बनाते हुए एक 90 डिग्री एंगल पे पूरी बॉडी वेट से घुमाते हुए उसके चिन पे मारेगी, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए चल उठ जाएगा। उसी समय वो लड़की वहां से निकल जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि एक थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद, एक थोड़ी सी कोशिश के बाद आप इस समस्या का एक समाधान निकाल पाए। उसी तरीके से SPFL ट्रेनिंग में हम और ज्यादा समस्याओं को उनका ध्यान रखते हैं और किस तरीके से उनसे निकालना है बताते हैं, आपको सिखाते हैं। जैसे कि एक महिला का गला दबाया जा रहा है, उसके बाल खींचे जा रहे हैं, एक व्यक्ति आगे से या साइड से उसको दोनों हाथ से जकड़ के उठाने की कोशिश करता है, उसको जमीन पर धक्का दे देता है, उसके ऊपर बैठता है। वो किसी भी तरह का अटैक या थ्रेट हो सकता है। उन समस्याओं को सोल्यूशन हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं और आप सीख सकते हैं। हम चाहेंगे इन टेक्निक्स को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें, इनको सीखें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सीखना सिर्फ आपकी जरूरत ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये सोचा कि हमारी
नौजवान लड़की सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चाहिए। अपना बचाव बनना, अपनी खुद रक्षा करना, ये स्किल है, ये लाइफ स्किल है। और ये छोटी उम्र का नहीं रहेगा, ये शुरू होगा छोटी उम्र से और जब तक जीवन रहेगा लाइफ स्किल। तो ये जो स्किल काउंसिल में आपको एक उदाहरण है, ये जरूर है कि ये याद नहीं रहेगा कि हम ऐसे करें या ऐसे करें या ऐसे करें। ये जब आप ट्रेनिंग लेंगे आपको मानसिक बहादुरता मिलेगी, मेंटल ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटल स्किल मिलेगी। ये मैंने भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नेशनल पुलिस अकेडमी में, लेकिन ये जरूरी याद नहीं है कि मैं पहले ये करूं या पहले वो करूं या पहले ये करूं या पहले ये करूं का काम। लेकिन हमें पता होना चाहिए अलर्ट कैसे रहें, अपने आप को मानसिक तरीके से बहादुर कैसे रहें। तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपको बहादुरी सिखाती है, अलर्टनेस सिखाती है, आपके रिफ्लेक्सेस को सॉफ्ट करती है और आपके रिएक्शंस को शार्प करती है। ये सेल्फ डिफेंस, इसलिए भूलना दोहराने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं याद रहेगा कि मैं उसको ऐसे करूं या उसको मरोड़ूं, या ये नहीं, ये इससे घबराना। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज नॉट मेमोरी, मेमोराइजिंग, ये याद रखना, ये कोई लेसन प्लान नहीं है, ये सिर्फ मानसिक अलर्टनेस की। और ये दिमाग में रखना है कि मुझे अपना बचाव करना आना है। सड़क पे जाते हुए ये नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चले सुनेंगे कि मैं क्या हो रहा आसपास, ये गाड़ी कौन सी एकदम पार्क हो रही है या गाड़ी के लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना डिफेंस करना तो आना चाहिए, लेकिन कान भी तो खुले रहने चाहिए ना, आंखें, कान, ये चतुरता, ये अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपको मेंटल रिफ्लेक्सेस दे रही है, फिजिकल रिफ्लेक्सेस दे रही है, आपकी स्टेमिना भी बना रही है, आपको कॉन्फिडेंस भी दे रही है, आपको बहादुर करेजियस भी बना रही है, लेकिन अलर्टनेस भी सिखा रही है। तो अलर्टनेस के लिए अपने वातावरण में ध्यान रखना चाहिए, कान खुले रहने चाहिए। अब इस लड़की ने सेल्फ डिफेंस में कान उसके बंद है, वो कुछ सुन रही है मुझे, ड्राइविंग करते हुए, वॉक करते हुए, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अपने कान खुले रखने। और साथ 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 ट्रेनिंग एक बात नहीं है, ट्रेनिंग के बाद अपने आप को अलर्ट भी रखना। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप रिएक्ट कैसे करें, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो रिएक्ट कैसे करो, आप डर जाओ। इसलिए फिटनेस मींस स्टेइंग फिजिकल, स्टेइंग अलर्ट, और अपने सामने आसपास होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो अगर हम ये करेंगे, और ये लड़की हो या लड़का, सबको चाहिए सेल्फ डिफेंस एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सभी को चाहिए। या लड़कों को क्राइम है तो उनको भी मिलती है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि लड़के फिर भी मसल, लेकिन लड़कियां जब तक अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगी वो मसल्स नहीं बनती। जब तक मेरी कॉम नहीं बनेगी कैसे मसल। मैं यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स स्किल्स काउंसिल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक शुरुआत ये लगातार रहेगी, स्कूलों में रेगुलरली अगर हम स्किल डेवलपमेंट देते रहे, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, योगा भी कराएं और कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी कराएं और फिर स्पोर्ट्स भी खिलाएं, वो गिरेगी उठेगी सब कुछ आए तो उसको आगे जाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे दिया और मुझे भी इसको मौका दिया मैसेज दिया। धन्यवाद और जय हिंद। Thank you, ma'am, for this supporting this initiative of us. लेकिन बहुत काम है सारा सारा अगर वो करोगे तब। Okay, now moving ahead, we have Dr. Anubhuti Chauhan with us. She is the founder and president of Arunodaya Society and former co-chairman of Women Football Delhi. She is also the general secretary of World Women Awakening Organization. Can we have some special address by you on women safety, ma'am? Good afternoon, all, and eminent guests at the stage.
none other than the Iron Lady, Miss Kiran Bedi ji. हर कोई यहाँ पे उनका फैन है. अगर मैं बोलूँ कि मैं उनकी फैन हूँ, that's not fair. मैं कुछ बताना चाहूंगी. In 1975 on 15th of August, आप posting आप एक प्रोग्राम में जानकी देवी कॉलेज में आई थी. तो my mother was there. जब उन्होंने मैम को सुना, तो उन्होंने तभी डिसाइड किया था कि मैं तो नहीं बन पाऊंगी. मैं she was the principal. मैं अपनी बेटी को इनके जैसा बनाना चाहूंगी. So I am on the same track, ma'am. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रही हूँ. इंटरनेशनल तक अपना सारा है. एंड हमारे जो गेस्ट हैं आज, फर्स्ट अप आई वुड कांग्रेचुलेट टू SPEFL स्पोर्ट्स काउंसिल CEO मिस्टर तहसीन जायद जी, मिस्टर नीरज जैन, मिस्टर जलज दानी जी, मिस पूनम जी. मैम ने जब कोटेशन चेंज कर रही थी, तो थोड़ी सी मेरी भी क्रिएटिविटी डेवलप हुई. तो मैंने भी कोशिश किया ट्राई करके. मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, सशक्त बनेगी भारत की हर नारी. बिकॉज ऑफ दिस काउंसिल एंड मैंने ये जो प्रोग्राम है, जो उनकी ट्रेनिंग है, खुद देखी है मेरठ में. जब 250 गर्ल्स को मिस ज्योति जोशी जी एंड सेल्फ डिफेंस टीम, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. क्योंकि इन लोगों ने they did a wonderful job. इन्होंने उन 250 गर्ल्स को इस तरह ट्रेनिंग दी थी कि देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दैट गर्ल और जो ट्रेनिंग नहीं ली हुई है उन वाली गर्ल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. उन लोगों का एक बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर दी थी इन लोगों ने. और इनके साथ एक ट्रेनर थे मैम, जिन्होंने शायद मर्दानी मूवी में भी उनको ट्रेन किया था, रानी मुखर्जी को. तो कुछ पॉइंट्स मैंने भी ट्राई किए थे सीखे, क्योंकि जब इस फील्ड से हूँ तो जो सीख सकती हूँ. और मैम आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, लेट्स ट्रेस द स्कूल एंड पेरेंट्स. गुड बॉय. ये जो आपने थीम मुहिम चलाई है, दिस विल एनकरेज द सोसाइटी. क्योंकि बॉयज को तो ये ऑलरेडी पता होता है कि वी आर नॉट गुड. हमें तो ये कहा ही जाता है ऑल मैन आर लाइक दैट एंड ऑल मैन. तो उनको बचपन से ऐसी उनकी परवरिश की जाती है. तो जब उनको पता चलेगा कि अच्छा हम गुड भी है, हमें एनकरेज किया जा रहा है, हमें टैग दिया जा रहा है, तो एवरीवन विल ट्राई टू डू दैट. हर किसी लड़के की ये कोशिश हो जाएगी कि व्हाई डोंट बी, हम इस लिस्ट में क्यों ना, गुड बॉय की लिस्ट में हम क्यों नहीं आए. तो ये तो एक बहुत ही अनोखी और बहुत अच्छी आपने पहल स्टार्ट की है. एंड वुमेन पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी एंड फियर ऑफ द सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द वुमेन सेफ्टी. एलिमेंट्स जो है 3, मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगी कि सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है. इमिनेंट थ्रेट, रीजनेबल फियर ऑफ हार्म and proportionate response. Self-defense gives you the skills and the tools you need to confidently assess that dangerous situation and navigate effectively. There is nothing more empowering than that. It helps you gain to confidence and control your fear. Confidence is like a superpower, and every woman has right to take the superpower. So this is the much needed thing, self-defense. तो मैम और सारे पॉइंट्स पे पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं, तो आई हैव नथिंग टू से दिस. एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द एंटायर टीम ऑफ द FICCI एंड स्पोर्ट्स काउंसिल. थैंक यू. जैसा कि अनुभूति जी ने बताया कि वो कुछ स्किल्स सीखती है जब कुछ होती है ट्रेनिंग. हम लोग के साथ भी होता है, जब हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग्स में तो हम लोग भी स्किल्स सीख लेते हैं. जब ट्रेनर सिखाते हैं फिर घर में आके अपने बच्चों के साथ उसको अप्लाई भी करते हैं, रिवाइज भी करते हैं. तो काफी हम लोग भी सीख चुके हैं स्किल्स. Okay, now I think this is the time for question and answers. So we can invite few questions right now. Yeah, please go ahead. It's not actually a question, Dr. Bedi. This is a story which I'll take just a minute to share with you. I'm part of FICCI. My name is Deepti, and this is about my mom. So आपने मेरे मॉम की जनरेशन वाली मॉम्स को बहुत इंस्पायर किया है, और जितने भी मेरी एज ग्रुप के लोग हैं उन्होंने ओवर द इयर्स एक ही सेंटेंस सुना होगा कि तुझे किरण बेदी बनना है. So that is exactly the tone. For years and years and years, my mom used to say this to me, and I would wonder because उसमें TV इतना accessible नहीं था, आपके बारे में जानना इतना accessible नहीं था. So I would wait for the right time, your book to release, to find out, to see कैसा है कौन, उन्होंने ऐसा किया क्या है. And then I realized that why for mothers of my generation, like my mom's age,
why you were so important, why you were so inspirational, and why, the girls, the women today look up to you, learn so much from you. And thank you for inspiring a whole league of women in India. Thank you. Thank you so much. Any other questions, please? This is for the story, so we can have questions now. Anybody wants to ask anything from the panelists? Hello. Hi, ma'am. Namaskar. Myself, Amar Singh Bis, and when you were IG Tihar. So I have read that book. हाँ, मैंने वो book पढ़ा है आपका. जब आप IG तिहाड़ थी तो आपने how you like work for the ladies there, inmates and the prisoners. SSG groups के बारे में मैंने वहाँ पे पढ़ा आपका जो positive efforts थे. आप अलग थी और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा सा अलग थे. So उसपे अगर आप थोड़ा सा अगर 2-3 लाइन का प्रकाश डाल सकते हैं तो प्लीज. मतलब आई मीन टू आस्क कि वो जो इनिशिएटिव आपने उस समय लिए थे, क्या सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है यहाँ पे? तो क्या हम अपने मतलब जो घर की महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्या सेल्फ डिफेंस की मुहिम के साथ साथ? क्वेश्चन ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल सकते हैं कि जो आपने तिहाड़ जेल पे जो बुक लिखी थी जिसमें आपने वुमेन्स के लिए काम किया और वहाँ के जो प्रिजनर्स के लिए काम किया इन शॉर्ट लाइंस. थैंक यू. जो तब शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है. That's great, ma'am. That's great. सिर्फ ये फर्क है शायद अब अंदर क्या क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन जो कि प्रेजेंट के टाइम पर ही पैदा हुई थी. जब मुझे डायमंड मैक्सेस से अवार्ड मिला था तब उसी के साथ अनाउंस किया था कि ये अवार्ड एक संस्था को जाएगा. संस्था उसके स्थापित होगी जिसमें प्रिजन रिफॉर्म्स जारी रहेंगे. वो अभी भी जारी कैसे है कि अब हम लोग नॉर्दर्न इंडिया, साउथ यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ऐसी जगह, पंजाब, यहाँ तक कोशिश करते रहते हैं और यहाँ तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टाफ हम सिखाते रहते हैं. यही पुरुषों को प्रिजन जो मेल प्रिजनर्स हैं उनको गुड बॉय बनाना. तो हमारी गुड बॉय कैंपेन अब जेलों में भी चल रही ताकि आप गुड बॉय बन के जाओ. बैड बॉय बन के आए थे, अब तुम गुड बॉय बन के जाओ. और वो सारा शिक्षा से था, स्पिरिचुअलिटी से था, धर्म से, वैल्यू बेस्ड संस्कार. तो हम लोग संस्कार देते रहते हैं एज स्वयंसेवी संस्था प्रिजनर्स को और हजारों प्रिजनर्स को, यूपी के प्रिजन, हरियाणा के प्रिजन, तो एक करते जा रहे. तो जो तब हमने शुरू किया था तब जो डायरेक्टली अब हम लोग थ्रू संस्था करते रहते. इसीलिए मैंने आपको गुड बॉय कैंपेन दिया क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रिजन में भी गुड बॉय कैंपेन जारी रखे कि अब यहाँ से जाओगे गुड बॉय बन के जाओगे और वापस नहीं आओ. Thank you, ma'am. Thank you for the gift. Thank you so much. Yeah, we have this. Yeah, please. Good afternoon, ma'am. I am absolutely starstruck for starters and really nervous to ask. But I was thinking about that point you said about shaming the culprit and reaching out to his parents and the teachers and the community leaders. What I was concerned was when one does stand to do that, there are certain generational ideologies that are hard to challenge. For example, if a person were to confront a culprit's parents and they in turn try to protect that son, so how are we supposed to fight that? You know, suppose a guy did something wrong and then you confront their parents. So, I'm so sorry. And then the parents try to protect that son. So, how are you supposed to stand up for yourself when everyone just thinks it's your fault? I'm so sorry. I'm so sorry. So are you saying कि जहाँ इंसिडेंट हुआ parents will certainly protect their boy? Yeah. कोई बात नहीं, उनको करने दो. इससे ये नहीं घबराओ कि उसको एक्सपोज नहीं करो, क्योंकि एक्सपोज नहीं करोगे तो वो और करेगा. इसलिए देखिए वही बात है ना, बहादुरी की बात. अब आप कंप्लेंट से भी डर रहे हो, हम कंप्लेंट से भी डर रहे हैं कि हम अगर बताएंगे तो वो आदमी हमारे पीछे पड़ जाएंगे या वो बहादुर ज्यादा है, इन्फ्लुएंशियल है, तो समझ नहीं आएगी. See, you are already afraid to now complain. That means we need an ecosystem. What is ecosystem? Is also police. Police is an ecosystem. NGO is an ecosystem. RW is an NGO system. Neighborhood is an NGO system. कहाँ मदद दे सकते हैं ये क्लिनिक. लेकिन हम लोग को अब समझदारी से करना है.
कि अगर हमने हिम्मत की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, इसलिए हो सकता है मीडिया भी चला जाए। तो अब कौन सी इंग्रेडिएंट काम आएगी, कौन सा मसाला काम आएगा, वो हमको सोच समझ के करना है। लेकिन अगर आप एक्सपोज नहीं करोगे, वो आदमी और लड़का बहादुर होगा, वो करता जाएगा। एक रेप किया, दूसरा रेप करेगा, तीसरा, क्योंकि उसको पता है कि लड़की ने शिकायत तो करनी नहीं। इसीलिए जैसे वो बच्चे के दिमाग में ना, नहीं हम लड़की को, आई थिंक वी शुड सिचुएशनली डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, पुलिस के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, एक एनजीओ के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, टीचर के साथ भी डिस्कस करते हैं, मीडिया के। अब मुझे नहीं पता कौन सी चाबी काम का आई, तो कोई ना कोई चाबी काम जरूर आएगी, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ना इज एक्चुअली इनकरेजिंग द नेक्स्ट विक्टिम। तो घबराना नहीं, लेकिन ये नहीं है कि कोई बिना मदद किए चले गए उसके पास, तो तुमने ये किया नहीं। You have to take people along. You'll have to take society along. You'll have to take RW along. You have the neighborhood association along. Maybe take media along or take नहीं, और वो लड़का भी एक्सपोज है, लेकिन बिना कंप्लेन किए रास्ता नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। अब कहां तक नेम और शेम हो, ये अब अगर मीडिया तक चला गया बात तो ज्यादा फैल जाएगा, अगर नेबरहुड में चले गए तो नेबरहुड में फैल जाएगा, लेकिन कंप्लेन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम सारी उम्र खुद अपने आप को कोसोगे कि मैंने डरी रही और मैंने शिकायत नहीं की, और अपने आप को विक्टिमाइज्ड समझो। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी विक्टिमाइज्ड, डोंट लिव विद विक्टिमहुड, डोंट लिव विद विक्टिमहुड, देन have courage, and then you have to get, that is why self defense will help you. Self defense training will give you courage कि मैंने ये इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करना, ये इनजस्टिस को टॉलरेट करके जीना नहीं है, मैंने इनजस्टिस के लिए कैसे डील करना है, ये मेरी मेच्योरिटी, अब मैं डील करूँ। सो बिना चुप रहने से, हजम करने से, वो आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करेगा और आपको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी, you will suffer from some complex. So I want you to think about it every year and see where you get the help. Okay? Thank you. Thank you. Okay. Yeah. And there are good NGOs also. You should know where my NGO, another NGO can be found. NGOs easily okay. Yeah, next question, Thank you, please. Hi, ma'am. My name is Shrishti, and I've come from Bangalore, and I run a sports ethic platform. Now, first of all, ma'am, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि किरण बेदी मैम जैसे लीडर बनो। मम्मी ने कहा, मैं अगर मेरे कभी बेटी हुई तो मैं भी जरूर कहूंगी कि किरण मैम जैसे लीडर बनो। Ma'am, actually my question is to Tehsil sir and Neeraj sir. Sir, you spoke about this program, and I wanted to know between the age of 8 to 18, any female, how do they register for this program? Because most of the training is online. So how does that happen, and what is the process to do that? Okay, so generally, till now, what we have been doing was a physical training program which was happening through camp mode. So we send our trainers, we set up a training schedule, timetable is there, and a particular place is zeroed in to run a training program. And generally, these training programs till now have been funded by various government agencies and PSUs, so they give their areas to work. So, for example, we completed 10,000 training for girls in ITI, and that was in Uttar Pradesh. So each ITI going girl was supposed to attend this training. Now, we have not started doing individual training as of now. These are group trainings. And this was the reason when Honorable Dr. Bedi said that we should actually launch online version also, so that if the girl is not able to attend a physical camp mode training, she can learn from the online. And online training is entirely free. It is on YouTube. You can go to our YouTube channel and keep on finding every month we'll be releasing one a film with situational things, and this will be a continuous series of films that will be launching, and anyone can go and just watch it. But if anyone wants to attend a physical training,
then I'll suggest you come on the website. We keep on announcing the camps also. So that is where you can have these things. Sure. Sir, I just have a suggestion because I run a Sure, sports please, please. edtech platform and it's an online platform. And we have students from 21 different countries. So online gives you a very big reach. But all the training, like we do umpiring trainings, we do analytics and a lot of other trainings. So just a suggestion to you, it has to be a hybrid form. So an online maybe, sir, recorded sessions are good, but live online sessions are much better because there you talk to the trainer, you ask a lot of doubts, and there's a lot of community kind of feeling. So that's just one suggestion. And second is hybrid can be, so you can have some centers like in Bangalore or anywhere in any nook and corner of India, जहाँ पे student जाके थोड़ा बहुत अपनी जो भी उसने सीखा उसकी practice कर सकता है और अपने questions पूछ सकता है. So the reach will be very huge, and half of India population, which is now 144 ka half, can actually benefit from it. Accepted your suggestions are very good. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा छोटा सा कि अभी तक तो देखिए जो ट्रेनिंग्स होती थी सेल्फ डिफेंस में वो जूडो कराटे लोग सिखाते थे जनरली उसको बोल देते थे सेल्फ डिफेंस कंफ्यूजन है उसमें इट कैन बी वेरी हार्मफुल समटाइम्स अगर हमने खाली मार्शल आर्ट सिखाया तो उसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जाना दे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और Thank you. Yes, one more question. नमस्कार मैम. मैम आप हमारे देश की किरण है और हमारे मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आपके फैमिली आपके बारे में और आपके राजनीतिक यहाँ तक पहुंचने के बारे में हम इससे इंस्पायर है मतलब कि हमारी मम्मी हम अपनी बहन और बेटी से भी ये बोलते हैं कि बनना तो किरण बेदी बनना मत बनना. पीटी उषा का नाम दिया जाता था आज के टाइम में किरण बेदी का नाम दिया जाता है डिफेंस के नाम पे. मैम ये मैं एक मेरा क्वेश्चन था और एक सजेशन भी था कि जैसे हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो अगर हम हर शहर में एक उनके साथ एक टीम बनाए जैसे अभी इस बच्ची ने बोला कि पुलिस के पास जाते हुए डर लगता है हर किसी लेडी को डर लगता है पुलिस के पास जाते हुए कि घबरा देगी FIR लिखवाएंगे बदनामी होगी तो एक टीम हम अपनी गठित करें महिलाओं की वहां पे जो उनकी हेल्प करे और उनके प्रोटेक्शन दे. ये मेरा सजेशन है आपके टीम के लिए भी कि हर शहर में जैसे उत्तर प्रदेश मेरठ से मैं आता हूँ तो मेरठ में अगर इस तरह की महिलाओं की टीम बन जाए जो स्पोर्ट्स की हो और उस लड़की की मदद कर सके कि वो बोल नहीं पा रही है दबी जबान में कुछ अपना आपने बोला कि दोस्ती के नाते बताए वो इस तरह को बन सके. मेरा निवेदन ये आप लोगों से. Thank you so much. Before we move ahead towards the end of the program, I would like to welcome and thanks to Professor Ayushi Ketkar from JNU, Secretary Judo Federation, Mr. Vipin Vig, founder member of SPFL, Ms. Rajni Sabharwal, and Colonel Gunjan Chaudhary, Director, NCDT. So I would like to go into felicitation program. I would request Renu to please bring the mementos. I would request Mr. Jalaj Dhani ji to please give memento to Dr. Kiran Bedi ji. Mr. Neeraj Jain ji to Anubhuti Chauhan. Dr. Anubhuti Chauhan. And Mr. Tehsil Zahid to Poonam Sharma ji. I would like to call upon Mr. Neeraj Jain, who is the President, SPFL SC. He's also the MD
of Costco India Limited and India's leading sports, fitness, and lifestyle brand. Can we have it here? Thank you so much. And members of the dais, Her Excellency Dr. Kiran Bedi, we are highly indebted for providing us the insight into the women empowerment today. And most importantly, the thing which you highlighted about the parents' role, the schools, the community in making the students and males much better than what they are. I think that is a very, very key takeaway from today's session for all of us. It's not just about hitting cause as an empowerment, but a social change, a thinking change is also very important. I'd like to thank Anubhuti Chauhanji for her work for the women upliftment and the field of sports. She's also taking care of football for women. She's a co-chairman here. And Mrs. Poonam Sharma ji for providing us graciously with your insight into flow and what the activities they're on being done. Jalaj bhai for always inspiring us and being here in spite of personal loss to his father, Ashwini ji, and Tehsin ji, our CEO. On a personal note, I'll just tell you that we being a manufacturer of sports and my daughter didn't go into sports because of me making all these sport products, but I think following you. So we used to tell her, you just have to be, you've been an avid tennis player, and I know that you've been a champion also. So we always used to say that, and we made the tennis ball, and one of the times I think we quoted your name also with that we started making before we left tennis, but we made the ITF approved ball in India for the first time and played in many of the Davis Cup matches, and all of the matches which are played with a Costco ball have always been in favor of India whenever they played in India. Yeah, of course. And that was great. And it has been an absolute honor for all of us to have all these inspirational leaders. They're not even inspirational, they're all transformational. They've transformed the society in totality, the way we think, the way we act, the way we perform. They've been so much, they've brought a lot of change in all the things which have been done. And women especially look towards you and for every work that you do, and you've got so many names, the Iron Lady or the Train Lady or whatever of Delhi, and a lot of things, and you've reformed, and the amount of activities you do, the Tihar jail reforms and all the women empowerment work you do. I think it's phenomenal with all the people here. I think it's great to be here and just thank you from the bottom of our heart that you've done great for this nation. And I think we will really we respect the services which you've provided for that. Also, I would like to take a small time to thank the NSDC. Fiki, they had some very big program today, and our President Emeritus, again, Jalaj Bhai, for his guidance and pushing all the SPF in the right direction and giving his time, which is the most important resource what he has provided to this. And a special thanks to Tehsin ji and the team, SPFL, Sports Skill Council, the shorter name, and Priya, Parna ji, and Neha, Rakesh, and so many names which I miss out. And they're doing a phenomenal job and actively led by Tehsin ji and Vipin ji for being a member, and even he's in Canada and he's always thinking about what's happening here, and he's here with us, and great to have your guidance always. And finally, I would also thank the participants here, both live and the participants who are watching us live on the YouTube today and watching this program. I'll just change it. Nari Suraksha Sabki Zimmedari.
और बेटियां सांझी होती हैं सबकी, and I think that should be the spirit we should carry back from this message. Thanks all, and I request everyone for the lunch. Please join us for that. Thank you. So before we move to lunch, let's have a group photograph first. Banquet hall. Thank you so much.